एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में हमारा अगला टॉपिक विच इज़ आईसी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है विच इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब आईसी से पहले हमारे पास डिस्क्रीट सर्किट्स एग्जिस्ट करते थे। नाउ वी नो दैट वी हैव वेरियस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड डायोड। तो इन्हीं सबको कंबाइन करके हम लोग हमारे डिस्क्रीट सर्किट्स बनाते थे। बट इनके कुछ लिमिटेशंस थे। सो क्योंकि हम लोग वेरियस कंपोनेंट्स को वायर के थ्रू कंबाइन करते थे तो इसका साइज काफ़ी लार्ज होता था। देन द पावर कंजम्पशन वॉज वेरी हाई एंड दे वर लेस रिलायबल। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू स्विच टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसीज। So ICs are made up of several components such as resistor, diode, capacitor, inductor, etc. and they are built on a small single block of a semiconductor known as IC. अब बात करें हम लोग advantages of IC over these discrete circuits, तो इनका साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। दे हैव अ लो पावर कंजम्पशन एंड दे आर वेरी मच मोर रिलायबल compared to discrete circuits. Now let us talk about disadvantages of IC. So they cannot be repaired after damage and ICs are useful for low power only. अब बात करें हम लोग अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ आईसी। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन थ्री क्राइटेरियाज। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ आईसीज। वी हैव एसएसआई विच इज़ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, वी हैव एमएसआई विच इज़ मीडियम scale integration, we have LSI which is large scale integration, and then we have VLSI which is very large scale integration. Now on the basis of construction we have monolithic IC, in which case we have all the components on a single semiconductor crystal. Then we have thick and thin fiber IC. So IC is built on an insulating surface. And at last we have hybrid IC. So it is a combination of monolithic and thick fiber IC. अब हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन आता है which is on the basis of application. So we have linear ICs in which the ICs are used in communication electronics, and then we have digital IC in which the ICs are used for calculators or any other devices. अब इसके बाद हमारा आता है एवोल्यूशन ऑफ आईसीज, जो कि पूरा ही एक थियोरेटिकल टॉपिक है। सो इसको आप इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट से समझ सकते हो। सो इस पूरी वीडियो में इट इज़ प्योर थ्योरी। यू हैव टू जस्ट see it, understand it, and learn it as it is. So that was all for this video, and I will see you in the next one.